I will try to complete gingival displacement and your impression techniques in FPD, some of the important question and concepts, right? So I hope you people are able to join. All there? But at least send hi in the neat chat. All there? Okay. So what is gingival retraction? So always remember one thing, that whenever we have prepared a teeth, right? So whenever we have prepared the teeth, especially when we are giving subgingival margins, okay, so we need to do a procedure that is known as gingival retraction. Okay, so gingival retraction, what the deflection of the marginal gingiva away from the tooth or the prepared of the prepared teeth, तो उसको हम बोलते हैं it is the gingival retraction. इसे gingival deflection भी बोलते हैं, इसको gingival displacement भी बोलते हैं, और gingival tissue deflection एक ही बात है. So these are the various terms. Normally we do it for subgingival margins. Yes, we can do it for equigingival margins as well, but for all practical purposes, supragingival margin does not need gingival retraction. Okay, so it doesn't need your. Normally we do it for subgingival margins. Yes, we can do it. Okay, got it? Now, what we have to so what we are doing is the need. Remember one thing, that your margin of the teeth is covered by the gingiva, right? यहाँ से gingiva से covered है ये margin. Remember one thing, that जब तक मेरा material, till my material goes into this enough space of the gingival sulcus, goes inside, then only it will record the prepared as well as the unprepared teeth. Remember one thing, that आपकी जो whenever you have given a subgingival margin, you don't only record the subgingival margin but also a bit of unprepared structure of the teeth. Until or unless the technician knows about the prepared and the unprepared junction of the teeth, so otherwise what will happen, it will be a problem. So you have deflected the marginal gingiva away so as to widen the gingival sulcus by doing various retraction, and we want our material to go inside the sulcus and record the prepared and the unprepared portion of the teeth, right? And then the technician will pour the dye, and he will make the wax pattern and everything, right? So always remember one thing, that एक और question आता है कि बेटा कि what is the critical sulcular width that should be minimum present, ठीक है? So it is 0.2 mm minimum critical width, कि हमारा material our material should not tear, it is 0.2 mm. Remember this. Okay, इतनी स्पेस मिनिमम होनी चाहिए कि हमारा मटेरियल जाए और बिना टीयर के बाहर निकल आए. रिमेंबर दिस, टू हैव अ गुड टीयर स्ट्रेंथ. तो एटलीस्ट हमें जिंजाइवल सल्कस में इतनी जगह तो क्रिएट होनी चाहिए 0.2 मिलीमीटर की, राइट? ओके, so what are the techniques of gingival displacement? Okay, so the techniques of gingival displacement is mechanical. The mechanical means the
कीमोमैकेनिकल, थर्ड इज द सर्जिकल, उसमें हमारा रोटरी जिंजाइवल क्यूरिटाज आता है. ओके, but I am going a bit slow so that you can slightly write down if you want. And electrosurgical methods and the combination of all. Okay. Got it? So mechanical methods, remember this, that कि अब हमारा main, what is the main function of gingival retraction? Now people, अब आप बोलेंगे कि भाई कि हमारा जो मेन फंक्शन है जिंजाइवल रिट्रैक्शन का इज टू डिफ्लेक्ट द मार्जिनल जिंजिवा अवे फ्रॉम द प्रिपेयर्ड एंड द अनप्रिपेयर्ड टू स्ट्रक्चर. नो, इट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव बाय डूइंग अ जिंजाइवल रिट्रैक्शन. सो what we want to achieve, two things, especially two things. One, definitely we want to physically, displace the gingiva away, but also we want the area that we are recording should be free of any of GCF or any blood or saliva. Okay, got my point? So ये दो ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए when we want to do gingival retraction. One, to physically or mechanically displace the gingiva away from the tooth structure away. And दूसरा कि भाई जब हमारा मटेरियल जाए सल्कस में, because most of the materials except your polyether, remember this is what I am saying, most of your materials, the elastomer or the rubber based materials, they are inherently hydrophobic in nature. Hydrophobic क्या मतलब है? Water hating, moisture hating. So if there is a moisture, it won't be able to record the exact, it won't be able to reproduce the exact details because of the presence of moisture. So two objectives should be there of gingival retraction. One, to mechanically displace the gingiva, and second, hemostasis. We should have a dry field. Two things, remember this, right? Okay. So what are the various mechanical methods? Mechanical methods में we can see that yes, फर्स्ट पहले आते थे कॉपर बैंड्स आते थे. सोचो, देवर कॉपर बैंड्स इनिशियली. कॉपर बैंड्स वर दी हॉलो कॉपर बैंड्स. you do the gingiva, the preparation, and the dentist what he used to do, for every tooth contour there were copper bands available. So what he used to do, okay, after crown preparation, he used to just put it on the prepared tooth structure and ask the patient to bite. What will happen? It is just a mechanical method. It will mechanically, actually, it is creating wound in the gingiva. So actually it used to, what it used to do? So it used to create an injury. Compress, right? तो ये ठीक नहीं था मेथड. Impression compound, because there were tube impressions in the copper bands being made with the impression compound. तो वो कहते थे कि भाई इससे हमारा वो फंक्शन भी अचीव हो गया, राइट? So these were not great methods. Aluminium shells were used. Mechanical pack of सोचो ZOE were used, right? Then came normal retraction cords or the synthetic rods, rolled cotton or normal retraction cords without any hemostatic agent. अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल रिट्रैक्शन, तो उसमें प्लेन रिट्रैक्शन कॉर्ड है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए. बिकॉज इफ यू आर एडिंग एनी सोल्यूशन, एनी hemostatic agent, any local styptic, any vasoconstrictor, any solution for that matter, so remember this, it becomes chemomechanical. मैं अभी आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू मैकेनिकल मेथड्स. सो अ प्लेन रिट्रैक्शन कॉर्ड पैक्ड अराउंड द टीथ is an example of mechanical method. ठीक है? नाउ दीज नॉर्मली मे बी ट्विस्टेड, ब्रेडेड, knitted. ओके, तो ये बहुत सारी उसमें हो सकती हैं, वेरियस साइजेस दे कम. तो हम उसे सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो आई विल जस्ट टेल यू अदर मेथड्स एज वेल. वी फर्स्ट सी हाउ मच width, how much space is present in the gingival sulcus, and if there is a lot of space, we will use
a retraction cord that is more thicker, if we see that it is the sulcus, the space is lesser, we will use the gingival retraction cord that is having a very less diameter. So normally in Indian markets, if you see the gauge in which this is the thickness is present, it is being denoted by, for example, if I say 30, 000, it will be the thinnest. If I say single zero, it will be the thickest. If I say 2 zeros, it is in the medium thickness. Again, I am saying if I say 000, retraction cord, it will be thinnest retraction cord. बहुत thin होती है. तो जहाँ पे sulcus में जगह कम होती है, whenever you see that the sulcus, in the sulcus the space is lesser, you can pack a 000 cord. But if you see a lot of space is present, you can go for a more thicker cords. Then chemico-mechanical methods. So as I told that we have two function. One is to mechanically displace the gingiva. Second is to control it is a part of fluid management, right? तो इसमें basically हमारे बहुत सारे हमारे there are lots and lots of materials that we go ahead with. Vasoconstrictors, there are drugs with local styptic action. Styptic means local hemostatic agent, जो hemostasis produce करते हैं. Then there are astringents. Now there are example are very, very important. Okay, so when we go ahead with the examples, we say vasoconstrictors like epinephrine, right? Epinephrine, 8% epinephrine is normally used, but you have to be very, very careful when you are using these vasoconstrictors in cases of blood pressure patients, hypertensive patients, in hyperthyroid patients, right? You have to be careful. Okay, in cardiovascular episodes patients, so you don't have to use this. एक question बहुत important है बेटा कि आपसे पूछा जाता है कि whenever, तो हम क्या करते हैं, retraction cord लेते हैं और उनको soak करते हैं these agents और उसको pack कर देते हैं. सो जो रिट्रैक्शन कॉर्ड है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. जो रिट्रैक्शन कॉर्ड जब पैक करते हैं तो रिमेंबर दिस दैट इट इज द थिकनेस ऑफ द रिट्रैक्शन कॉर्ड इज क्रिएटिंग दैट मैकेनिकल स्पेस व्हेन वी आर packing it in the sulcus, and the solution that is there, it is going to create hemostasis or it is going to create that local styptic action. तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिट्रैक्शन कितनी देर छोड़नी चाहिए सल्कस के अंदर. सो वी शुड एटलीस्ट लीव इट फॉर एटलीस्ट 8 to 10 minutes inside the sulcus. So the retraction cord with the solution, it needs at least 8 to 10 minutes to do its work. Remove this, and when should the impression should be taken? Tell me. Within 5 minutes. So if my question is, after 8 to 10 minutes of keeping it inside the sulcus, after how much time should the impression be taken? If I say, I give you choices, after 10 minutes, after 15 minutes, after 20 minutes, and D option is immediately. What is the answer? What is the answer, students? So the answer is immediately. Your assistant should be ready with everything. So as soon as, why immediately? Why not after 5 minutes? Why not after 10 minutes? Why not after 20 minutes? So as soon as you remove the retraction cord, now because your there are various elastic fibers, collagen fibers in the gingiva, they tend to elastically recoil back. So तुम्हारी retraction waste जाएगी. Remember this. It recoils back. So you, to prevent that that elastic recoiling of the gingiva back to the tooth, so you need to make the impression as soon as possible after removing the retraction cord. Got it? Got it? Okay. So as I told, they should be contraindicated in cardiovascular patients, in pacemakers, hypothyroidism, patient on drugs like ganglionic blockers, Rao-Wolfia compound. These are the various examples where you should avoid these epinephrine and the vasoconstrictor drugs. Then you can use 5 to 25% aluminum chloride. बेटा ये क्वेश्चन आते हैं. 10% या 100% aluminum potassium sulfate.
Okay, that is alum. It is basically alum, right? It is considered to be the safest in cardiovascular patients. Got it? Then 15 to 20% tannic acid, 15 to 25% tannic acid. तो ये स्टिप्टिक्स हैं, दीज आर लोकल स्टिप्टिक्स. काइंडली अवॉइड जिंक क्लोराइड. लिख लो, ये क्वेश्चन आता है. बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स में जिंक क्लोराइड होता है. देर इज अ जिंक क्लोराइड 8%, around 5 to 8%, if I'm not wrong, the concentration is around 5 to 8% zinc chloride. It should be avoided as a retraction solution. Why? Because in many cases it has been seen that because of its caustic nature, zinc chloride, because of its caustic nature, it tends to necrose the gingiva. It tends to, so try to avoid zinc chloride. Then there are various other materials that has been used. Kindly write down, if if some even nasal decongestants, like phenylephrine 0.25%, right? Ferric sulfate, ferric chloride, right? Negatol, Mirocell, levoepinephrine. तो ये other materials हैं that are being used for the retraction solution. Got it? ठीक है. Now how to do it? We need an armamentarium, we need cord packer, a good quality cord packer. अब I'll just show you the various techniques. There is a single cord technique, there is a double cord technique, infuse dento, जो infusion technique है, we also say it is a I'll just write it down once again. So just a minute. So सिंगल कॉर्ड टेक्निक हो गई, डबल कॉर्ड टेक्निक हो गई, डेंटो इन्फ्यूजर टेक्निक, डेंटो इन्फ्यूजर टेक्निक. एंड एक और ठीक होती है कि एवरी अदर टूथ टेक्निक. ये छोड़ देना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एवरी अदर टूथ टेक्निक, every other tooth technique. Okay, so are you able to see this, right? So अब how to do this? We take the cord, ठीक है, we just tend to make a loop, a U-shaped loop around the teeth. Okay, and we just see that loop बना के mesodistally वो आ गया, और we just hold it like this as seen in the picture. I'll just improve the size of the picture, just a minute. Okay, but इससे ज़्यादा साइज करूँगा तो ये आ नहीं पाएगा. So we tend to make a loop. ठीक है, जस्ट स्लाइड इट. ओके, एंड जब हमने इसे कर लिया और हमने यहाँ पे एक लूप बना लिया, जस्ट क्रिस क्रॉस इट. थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चलना, क्रिस क्रॉस कर दो उसको यहाँ पे. कैन यू सी इट इज बीइंग क्रिस क्रॉस्ड, राइट? एंड विद द कॉर्ड पैकर यू स्टार्ट पैकिंग फ्रॉम वन ऑफ द प्रॉक्सिमल साइड. इफ यू सी दैट इट इज बीइंग स्टार्टेड विद द प्रॉक्सिमल साइड बाय होल्डिंग लाइक दिस फर्स्ट, राइट? पहले थोड़ा सा पैक कर लीजिए. तो इंटरप्रॉक्सिमल with the cord packer you just pack it. Then you can start from the buccal or the lingual aspect, go with the another proximal aspect, and then complete your packing. Now very important part that is there, just a minute.
Okay, then we proceed. Now, very important point that I want to show you is, okay, आपने there is a problem when you are packing it inside the gingival sulcus, is that आपने मान लीजिए proximal pack कर दिया, you have packed the proximal and then you go ahead on the buccal or the lingual aspect, you see that the proximal aspect comes out, वो खिंच जाती है, बाहर निकल आती है, again you go back, वो ये वाली बाहर निकल आती है, तो what to do? So remember this, there is a technique. तो जो आपका जो once you have packed the mesial aspect, so the angle of your cord packer of your, see, we can pack like this. So if you see that, so I can, if this is the tooth है ना, मैंने इतना पैक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, सो रिमेंबर दिस दैट योर कॉर्ड पैकर का जो एंगल है, इट शुड बी टूवर्ड्स दी ऑलरेडी, आई कैन होल्ड इट लाइक दिस और आई कैन होल्ड इट लाइक दिस, यस और नो कॉर्ड पैकर को, तो कॉर्ड पैकर को ऐसे होल्ड करना कि जो एंगल है इट शुड फेस टूवर्ड्स दी ऑलरेडी पैक्ड कॉर्ड, रिमेंबर दिस. तो इन द पिक्चर इफ यू सी, so in the picture if you can see, it is facing the already cord packed, then it will not come out. अगर उल्टा कर दोगे उसको, अगर आप उसे बाहर की तरफ करोगे ऐसे, तो it will come out, so it should not come out. Okay, right, then complete the cord and उसको फिर आप पूरा कर दीजिए. Wait for 8 to 10 minutes, remove this and just make the impression, no problems. You can see, right? Got it? डबल कॉर्ड टेक्निक, देखो नॉर्मली हम सिंगल कॉर्ड टेक्निक वी फॉलो सिंगल कॉर्ड टेक्निक, बट व्हेन वी हैव अ मल्टीपल प्रिपेयर्ड टीथ और व्हेन दी you see that your gum health is not that great, it is slightly compromised, then we go ahead with this technique, that is your double chord technique. Now it is important to understand what is a double chord technique. हम क्या करते हैं, देखो what we do, we take a very least diameter of the cord okay, and we placed in the depth of sulcus. Can you see in the picture, it is being placed in the depth of the sulcus. वो हमने एक कॉर्ड पैक आके वो कर दी sulcus के डेप्थ में. okay, then we take a larger diameter cord soaked in a hemostatic agent, जितना भी आता है हम उसे ऊपर पैक कर देते हैं, तो इट्स अ डबल कॉर्ड टेक्निक. ओके, स्पेस ज्यादा है. देन व्हाट वी डू इज वी लीव इट फॉर अराउंड 8 to 10 minutes. हम जो ऊपर वाली जो कॉर्ड है, जो ऊपर वाली जो लार्जर विड्थ की कॉर्ड है, उसको हटा देते हैं, एंड वी डू नॉट रिमूव द स्मॉलर डायमीटर कॉर्ड बिफोर मेकिंग द इंप्रेशन. वी डू नॉट रिमूव दिस, इट इज बीइंग प्लेस्ड इन द डेप्थ ऑफ द सल्कस. सो व्हाट इट इज प्रिवेंटिंग, when only the upper larger diameter cord is removed and the lesser diameter cord is not removed it in the depth of the sulcus, so we just make the impression with the lesser diameter cord still placed in the sulcus. So it will prevent what? It will prevent that elastic recoiling. That's why, that is the concept. Impression ले लिया, काम हो गया. Even if it is being picked up, no problem, you can just remove that. Third is the dento infuser technique. ये पूछा जाता है कि what material is used in dento infuser technique. So the material that is being used in dento infuser technique is a ferric sulfate medicament. लिख लो, ferric sulfate is being used in your around 15-20% में अवेलेबल होता है. So it is being injected, you can see it is the injector or the infuser that is infusing what? the so ferric sulfate is being injected inside the sulcus, it achieves hemostasis. उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, अगेन वी प्लेस द कॉर्ड इसके ऊपर,
ठीक है, कॉर्ड प्लेस कर देते हैं, अगेन यू नो बीइंग सोक्ड इन द सेम सॉल्यूशन, we just place the cord and then we remove it and then we wash it with the water and then we make the impression. remember this that क्योंकि इसके अंदर सल्फेट है. देखो नॉर्मली हम जब इम्प्रेशन लेते हैं वी से दैट वी शुड नॉट मिक्स योर एडिशन सिलिकॉन और योर सिलिकॉन्स with your normal latex gloves on. Why? Because of the unprocessed sulfur, it tends to interfere in the polymerization of the elastomer of the adhesion silicone normally. तो अब क्योंकि इसमें भी सिलिकेट है, सल्फेट है, S is there, so we should first rinse the sulcus well because it is ferric sulfate. Remember this, वहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, so we should first rinse it with water before making the impression. ठीक है. Then surgical methods. सर्जिकल मेथड में बेटा देयर इज समथिंग रोटरी क्यूरेटाज जो आप बड़े ही शान से करते हो एज अ पोस्ट ग्रेजुएट और एज ए अंडर ग्रेजुएट. तो हम क्या करते हैं, हम जो प्रिपेयर करते हैं हम ध्यान ही नहीं देते, सल्कस में गए. एक्चुअली ये एक टेक्निक दी गई थी जिंजिटाज या रोटरी क्यूरेटाज, इसे ट्रफिंग टेक्निक भी बोलते हैं. ट्रफिंग टेक्निक इन विच वी इंटेंशनली रिमूव अ बिट ऑफ epithelial tissue in the sulcus, right? Okay, we remove intentionally epithelial tissue to create space in the sulcus. तो हम क्या करते हैं, एक 150 to 180 ग्रिट टॉर्पिडो नोज डायमंड को डेप्थ ऑफ द सल्कस में चला देते हैं पूरा सर्कमफ्रेंशियली. नॉट अ गुड टेक्निक बट intentionally or unintentionally we all do it, to be honest, whenever we are going for subgingival preparations. Okay, so but if somebody asks you ये procedure है but it is not great procedure. Okay, then we can use electrosurgical unit. For electrosurgical unit देखो जब भी हम electrosurgical unit produce करते हैं तो we use a current of larger intensity. ठीक है. Then what it does is it locally produce heat and the tip or the electrosurgical tip that is in contact with the tissues, it vaporizes because of that heat. Okay, so याद रखना 5 सेकेंड से ज़्यादा एक समय पे you don't have to keep it for more than 5 seconds. Keep it moving in the sulcus so that it removes a bit of sulcular tissue and it heals well. There is no bleeding and you can use electrosurgical unit also. But again it is a slightly traumatic method. So if somebody asks you for all practical purposes which is the best method, chemomechanical method is the best method for your gingival retraction. I again say chemomechanical method is the best method till now. ठीक है. तो एक सेकेंड just show you. तो these are the various electrodes, coagulating loop, diamond loop, round loop, बहुत सारे आते हैं. Don't worry, cutting loop, small loop, don't go into the details as much, just I am telling you, right? ठीक है. Remember this, whenever we are using electrosurgical unit we use fully modulated currents. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बारी नीट के एग्जाम में. fully modulated current are used because it has both very good cutting efficiency and as well as it has got a good coagulation effect. Okay, बहुत light pressure, do not keep it on the bone, just in the soft tissue. Okay, it can necrose the bone. You have to be careful when you are doing it. You have to be careful when you are doing electrosurgical. Do not use any of these units if you have unshielded cardiac pacemakers. Remember this, you have to avoid these procedures. ठीक. ठीक है. एंड जो डेब्रिस आता है उसको जब आप बिकॉज ऑफ द बर्न टिश्यू, ठीक है, यू कैन जस्ट टेक अ कॉटन पैलेट एंड जस्ट डिप अ बिट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जस्ट यू कैन क्लीन द डेब्रिस. है ना. हीलिंग इज वंडरफुल. 5 to 7 days, normally take more days to be honest, but book says that it takes lesser days, 5 to 7 days. ठीक है. राइट. रीसेंट एडवांसेस के आप सिर्फ नाम लिख लीजिए.
ठीक है. Even when you are a PG, you should know that what are the recent advances. Okay, so the name of the recent advances of these are gingiform, X-Pasil, magic foam cord method, Mirocell, gel cord, stay put retraction cord, compri cap, okay, Z twist weave, just show you. Okay, even lasers are used, compri caps. I just show you the pictures. मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा. Kindly write it down. Gingiform, X-Pasil, magic foam cord method, gel Mirocell, gel cord method, stay put retraction cord, compri cap, Z twist weave, and your lasers, right? जिंजीफोम, बेटा ये प्रिंसिपल था कि अगर मैं कुछ भी डालूं सल्कस में, कोई मटेरियल डालूं, वो सलाइवा को सोख ले और एक्सपेंड कर जाए. सल्कस को एक्सपेंड करें, हमारा काम हो गया. सलाइवा भी सोख लिया और हमारा सल्कस भी वो सोख के एक्सपेंड भी हो गया, हमारे दोनों काम हो गए. राइट. बेसिकली ये कौन से मटेरियल होते हैं? बेसिकली दीज आर एडिशन सिलिकॉन्स, इलास्टोमर्स और रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन सिलिकॉन्स होते हैं. ठीक है. दे आर जस्ट इंजेक्टेड इन दी सल्कस. यू कैन सी. ओके, पट्टी इंडेक्स बनाया, सल्कस में डाला. यू कैन सी इट हैज़ बीन इंजेक्टेड इन द सल्कस. सल्कस में जाएंगे, सलाइवा को वो करेंगे, क्या कहते हैं, दे विल जस्ट टेक अप द सलाइवा, एक्सपैंड द सल्कस, एक्सपैंड हो जाएंगे, डायलेट करेंगे सल्कस को, एंड देन यू कैन जस्ट मेक द इंप्रेशन. ओके. अगेन एक्सपासिल इज अगेन द सेम मटेरियल ऑलमोस्ट. ठीक है. So it is again, it comes in the paste form. I'll just show you the. तो पेस्ट फॉर्म में आता है. थोड़े महंगे मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. अगेन इट कंटेन्स पेस्ट दैट फिजिकली डिस्प्लेज द टिश्यूज लिविंग अ ड्राई फील्ड. ओके, यू कैन यूज दीज मेथड्स. You can see it is being injected, it expands, and you can just make the impression. Right. Magic foam cord, again it contains a unique expanding addition silicone foam for sulcus enlargement. You can use it with cord or without cord. ठीक है. इसमें एडवांटेज क्या है? बहुत जल्दी आप अगर से यू जस्ट पुट इट, यू कैन जस्ट मैजिक फोम कॉर्ड, you can just easily apply, and again it can do its work wonderfully well. Right. Now write down कोई एक ऐसा मेथड जो कि which contained first strip form retraction material. If something was there, it was Mirocell. If you see that in the next picture, Mirocell, there were these strips of material that again they were packed in the sulcus, and they absorb the saliva, again they expanded and causes expansion in the sulcus, and you can make the impression. Remove this and make the impression like this. I just show you. Okay, you can see it plays in the sulcus, it has expanded. After it is taking up the saliva, it expanded. Right. Gel cord technique. नॉर्मली हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पे जेल होता है, तो जेल का थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा बेटर होता है. राइट. तो जेल कॉर्ड टेक्निक. ठीक है. प्री फिल्ड जेल्स आते हैं, जिस डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, उसको डाल दो जेल फॉर्म में. उसके बाद आप यू कैन जस्ट प्लेस द रिट्रैक्शन कॉर्ड ओवर द जेल एंड यू कैन कंप्लीट द इम्प्रेशन. इंपॉर्टेंट. देयर इज अ स्टे पुट कॉर्ड टेक्निक. व्हाट वी कैन डू इज we can, you see, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ से हम it is, if you see a retraction cord, normal retraction cord, it is just the the fiber that are present. So as I told that, हम एक पोर्शन को जब वो करते हैं तो वो निकल जाती है. अब मान लो इसके अंदर एक पतला सा, बहुत ही पतले गेज का हमें कॉपर वायर डाल दे, तो अब कॉपर वायर है इसके अंदर, हम उसे वहाँ पे अगर वो करेंगे तो वहीं टिकेगा ना, इट स्टेज देयर.
तो होता क्या है, बाहर तो हमारी फाइबर्स हैं सेम कॉटन की या उसकी, और अंदर हमारा एक पतला सा, इट इज देयर इन अ डिपार्टमेंट, द माय पोस्ट ग्रेजुएट्स, इट इज देयर इन अ डिपार्टमेंट, आई विल शो यू टुमारो, इट इज देयर. तो स्टे पुट कॉट टेक्निक इज देयर, सो वी जस्ट पुट it stays there. Okay, so it is advantageous, it won't come out as I showed you. A normal traction cord comes out when you pack one portion, the other portion comes out. तो यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है इससे, राइट. स्टे पुट रिट्रैक्शन कॉर्ड टेक्निक, ठीक है. जिंजी पैक है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू कॉम्प्री कैप्स. यस, कॉम्प्री कैप, जैसे सी यू रिमेंबर इन मैकेनिकल मेथड आई शो यू कॉपर बैंड्स. तो सोचो अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूँ कॉपर बैंड का, इफ आई चेंज द मटेरियल ऑफ कॉपर बैंड, एंड जैसे आपके फोम के ग्लासेस होते हैं, सेम मटेरियल के कॉपर बैंड को मैं सेम डिफरेंट दांत के लिए उसको मैं एक फोम टाइप मटेरियल में रख दूं, और जब मैं प्रिपेयर करूं दांत और उसके ऊपर मैं पेशेंट को बोलूँ कि भाई अब दबा ले, उसके ऊपर रखो जैसे हम कॉपर बैंड यूज कर रहे थे वही हम करके, तो इट वोंट हार्म दी जिंजिवा, एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन वो सोख भी लेगा, एंड इट विल ऑल्सो पुश द जिंजिवा अवे. तो कॉम्प्री कैप्स कैन बी यूज्ड. कॉम्प्री कैप्स आर गुड. लेजर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नियोडाइनियम, सॉफ्ट टिश्यू आर्गन लेजर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस एज वेल. तो रिट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस दैट अगर रिट्रैक्शन ठीक नहीं होगी तुम्हारी मार्जिन रिप्रोड्यूस नहीं होगी इंप्रेशन में. If your margin is not reproduced well, the technician will make you so much happy by making his own margin, fancy margins, and actually you will see that there were lot of problems if your tooth crown margin is not seated on a tooth structure on the finish line, not finished well. Mind you will have a lot of periodontal implications. There will be inflammation for sure. There will be micro leakage for sure. There will be plaque accumulation. So we do not want this. Kindly do retraction in cases of even in case of anteriors, when you're doing subgingival margins, you want your margin to be fully blended with the crown preparation margin. Very, very important, right? I hope the topic is clear. I'll just quickly go ahead with my impression techniques. Okay, देखो impression techniques में if you want I can show you pics, but okay, no problems. Materials I will not tell you, I will just okay, before putty wash I will just tell you what is. So if you see that there are various techniques. First technique is the multiple mix technique. मल्टीपल मिक्स टेक्निक, राइट बेटा. मल्टीपल मिक्स टेक्निक को हम डुअल फेज इंप्रेशन, ये आपको नाम कहीं नहीं मिलेंगे सारे, रिमेंबर दिस, मैं बता रहा हूँ लिख लो, इतने सारे नाम नहीं मिलेंगे सेम के. मल्टीपल मिक्स टेक्निक और लैमिनेट टेक्निक, लैमिनेट सिंगल इंप्रेशन टेक्निक, या इवन रिमेंबर दिस, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन लॉट ऑफ प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड it is with custom tray impression technique, because we can use a heavy body with a light body in a custom tray. Remember this. Ideally we should not use a putty consistency in a custom tray, but we can use heavy body as a tray material. Right? So what we do is dual phase या multiple mix, as the name suggests. मैं क्या करूँगा, मैंने impression ले लिया, retraction कर दी. I have this made the custom tray for FPD. बेटा हम अपने टाइम पे for each and every impression until or unless there is a lot of undercuts, we used to, even in exams we used to fabricate custom trays for FPD impressions. Our guides, our teachers used to hate when we used to, because you used to make impressions in stock trays. They wanted us to make impression like this in custom tray. They are more, definitely they are more better, they are more more accurate, no doubt, right? तो क्या करते हैं हम, कस्टम ट्रे बना लिया हमने विद अ डबल स्पेसर. ओके, बना लिया, उस पर टिश्यू स्टॉप्स भी होते हैं. रिमेंबर इफ यू कैन सी देयर आर टिश्यू स्टॉप्स. जैसे हम कंप्लीट डेंचर में टिश्यू स्टॉप, वी शुड मेक टिश्यू स्टॉप्स ऑन नॉन फंक्शनल कस्प्स. रिमेंबर दिस, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर इन द ऑक्लूजन, बिकॉज पैलेटल कस्प, मान लो ये मैजरी का इंप्रेशन है, यू कैन सी या तो ऐसा एरिया जो हमारे
ऑक्लूजन में इफेक्ट ना करे, तो टिश्यू स्टॉप बनाए जाते हैं, जैसे सीडी में बनाते हैं टिश्यू स्टॉप्स, वैसे यहाँ पे भी बनाते हैं, राइट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। मेरा असिस्टेंट, मैं हैवी बॉडी मिक्स कर रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट लाइट बॉडी मिक्स कर रहा है, ठीक है। आई विल टेक द ट्रे मटेरियल, सॉरी, आई विल फर्स्ट on the tray, I will first coat it with tray adhesive, wait, and then I will just take the tray material on my in my custom tray, slightly inject the light body in the custom tray over it, and also inject the light body on the prepared tooth like a wash. Take this in a single impression. What will happen? The problem with this material is slightly, because it's a heavy body, it's a tray material. So whenever I am because of the hydrostatic pressure and because of the viscosity of the heavy body, it might displace the light body away from the prepared margin. That is the major disadvantage for this technique, single impression technique, multiple mix technique, laminate single impression technique. Got it? Multiple mix technique. Okay. Then there is a monophase technique. Excellent technique, no problem. Again, you can make it with a medium body polyether or a medium body adhesion silicone. See, the advantage here is you have the same, because of the pseudoplastic behavior of the adhesion silicone. Whenever we are taking a regular body, we are mixing it with pressure, it can act as a regular body, और जब वो एक्सट्रूड होके आता है उसमें से, कार्टेज में से, it acts as a light body because of the pseudoplastic behavior. Same material, no problem. We just okay, but remember this, whenever you are using a polyether, you need more space. So the wax thickness should be 3 mm minimum spacer before you are making a custom tray. Again, it's a custom tray technique, remember this. Same. So again, what we will do, same regular body is acting as a tray material. We inject it on the teeth because it is coming under pressure. It will convert it into slightly more running consistency on the teeth, and single impression. Beautiful, no problem. Monophase is a beautiful impression technique. Okay, then we have two more techniques. One is your putty wash technique. This is a putty wash technique. I see majorly my students making this putty wash technique. It is made in a stock tray because now there is a putty. Okay, what we do, again, it is also known as simultaneous technique, putty wash technique. It is also known as squash technique. It is also known as twin mix technique. ज़्यादा नाम कहीं नहीं दे रखे होंगे, लिख लो. पट्टी वॉश टेक्निक, इसको हम स्क्वॉश टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है. इसको हम ट्विन मिक्स टेक्निक भी बोलते हैं, इसको हम साइमल्टेनियस टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है. बट अगेन द प्रॉब्लम हियर इज एग्जैक्टली सेम टेक्निक है, बस वहां पे हैवी बॉडी थी, यहाँ पे क्या आ गई, लाइट बॉडी. तो लाइट बॉडी जब आपने ली और जब आपने पट्टी के साथ कंबाइन कर दिया, सिंगल इंप्रेशन एक ही बार में लिया, तो जब हैवी बॉडी आपको उस इंप्रेशन में उसको डिस्प्लेस कर दी तो टोटली डिस्प्लेस कर देगी. सो यू कैन सी दैट even the margins are being totally recorded in the putty, and that is not advantageous. That is not advantageous at all. So if you want that your material, that your margins should always be recorded in a light body, so you go ahead with a two-stage or a two-step putty wash technique. It is also known as putty reline technique, two-step. कैसे करते हैं? Normally we do it in two steps. पहले स्टेप में मिक्स पट्टी, प्लेस इनसाइड द ट्रे, स्टॉक ट्रे. आइदर वी यूज अ पॉलिथीन शीट एंड मेक द इंप्रेशन. तो क्या होगा, अंडरकट वंडरकट में कोई नहीं आएगा और एक ट्रफ बन जाएगा. देन वी टेक लाइट बॉडी, इंजेक्ट ओवर इन द टीथ, इन द ट्रफ, वी कैन प्लेस इट. तो उसमें क्या होगा, द मटेरियल इज ऑलरेडी सेट. इट वोंट नाउ एक्सट्रूड और लाइट बॉडी को फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे थिकनेस है लाइट बॉडी की. तो यहाँ पे 200% in a two-stage technique, in a two-step technique, in this technique, definitely all the margins will definitely be recorded, because it is not pushing, because you have provided space for the light body, you have provided more thickness. It is already set. But the problem here is, the major question that comes is,
because there might be so much undercut. So whenever we are placing it back second time, it may not be oriented because it's a stock tray. It doesn't have a stopper. It may not be oriented in the same place as we tried to do it in the first step. तो उससे हमारा क्या होता है, एंड ऑल्सो वी टेंड टू हम उसे बहुत जोर से पकड़ते हैं. इट्स अ विस्कोलास्टिक मटेरियल, सो ये दब जाता है. तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाए. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज अगर पट्टी वॉश टेक्निक यूज करनी है तो आई ऑलवेज सजेस्ट अ पट्टी रीलाइन टेक्निक रादर देन अ पट्टी वॉश टेक्निक. Got it? We can also, if you don't want to use this polythene sheet, you just make a normal impression without the polythene sheet and just use a putty scraper to remove the teeth area, make a trough, and again you can use your, this is a putty scraper. You can see ये आता है अच्छी कंपनी के साथ, ये सारा स्क्रेप कर देता है एरिया है ना. एंड नाउ यू कैन सी इन दैट इफ आई जस्ट increase the, if you see the size you can see that each and everything you can see. जो मैं बोल रहा था सारा का सारा रिकॉर्ड किसमें हो रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड इन लाइट बॉडी. दैट इज इंपॉर्टेंट. बट मैं आपको एक जस्ट आई विल गिव यू अ क्लिनिकल टिप. whenever you are, before you put a light body, always what you do, see आपको सिर्फ दांत चाहिए ना, तो जो भी इसके ऊपर वाला एरिया है सिर्फ 2 mm मार्जिनल जिंजिवा के ऊपर तक सब काट दो, सो दैट देयर आर नो अंडरकट्स. रिमूव द अंडरकट्स. जहां अंडरकट हो, जो सीटिंग में प्रॉब्लम करे, रिमूव द अंडरकट्स, कट कर दो उसको, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. गॉट इट? ठीक है. तो प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन होती है. और वेन एवर यू आर मेकिंग द इम्प्रेशन विद योर एडिशन सिलिकॉन, ट्राई दैट you should pour the cast at least half an hour later because of the release of the hydrogen gas. So और सारे materials को आप immediately pour कर सकते हो, but then with the addition silicone, because of the liberation of the hydrogen gas, there is a problem. So you can see that, you can see this, see if you can see this, there is a, when you are seating the putty, because you are trying to seat it fully, you are actually over compressing it. ठीक है. when you are compressing it, over compressing it, you see that when you are over compressing this, okay, तो होगा क्या कि बाद में इलास्टिक रिकवरी होगी, यू गेट अ शॉर्टर एंड अ नैरोअर डायट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो पैसिवली सीट करना है उसको. अगर हमने जोर से सीट किया तो जैसे मैंने बोला, बिकॉज ऑफ द विस्को इलास्टिक बिहेवियर देयर माइट बी अ लॉट ऑफ कंप्रेशन. आफ्टर वो ही इलास्टिक आपने रिकॉर्ड तो वो कर लिया, बाद में रिकवरी होगी तो आपकी डेफिनेटली शॉर्टर और नैरो डाई आएगी. राइट? ठीक है. और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं बेटा. देयर इज इंजेक्शन मोल्डिंग पटी वॉश टेक्निक. देखो उसमें क्या करते हैं हमने नॉर्मल इंप्रेशन ले लिया, उसको अंदर से कर दिया, एंड देन व्हाट वी डू इज वी जस्ट मेक अ होल ओवर, ऊपर से छेद करते हैं और उसके अंदर से फिर हम पट्टी इंजेक्ट कर देते हैं सिर्फ उसी दांत में. राइट? सो इट्स अ इंजेक्शन मोल्डिंग पट्टी वॉश टेक्निक. नॉट दैट वो ज़्यादा फॉलो नहीं होती है, बट देन और एक और टेक्निक है टू क्रिएट स्पेस, इज अ जिगल टेक्निक. हम क्या करते हैं जब कि वेन एवर वी आर मतलब मेकिंग द इम्प्रेशन इन द फर्स्ट गो, हम उसको मीडियो लैटरली ट्रे को थोड़ा सा हम उसको ऐसे रॉक करते हैं. सो व्हाट इट डज इज इट क्रिएट स्पेस. क्या करते हैं, हमने पट्टी मिक्स करी, ट्रे में डाली, वी आर नॉट यूजिंग एनी पॉलिथीन शीट. अगेन इट्स डबल स्टेप बता रहा हूँ. अनदर टेक्निक टू क्रिएट स्पेस इनसाइड द हैवी बॉडी इन द पट्टी बॉडी विदाउट ट्रिमिंग, विदाउट एनीथिंग. व्हाट यू डू, यू जस्ट प्लेस इट. अभी भी वो सॉफ्ट है मटेरियल, जस्ट थोड़ा सा मीडियो लैटरली उसको ऐसे जिगजैग करो. तो डेफिनेटली जब आप ऐसे ऐसे करोगे उसको, हल्का सा मुंह के अंदर ऐसे ऐसे मीडियो लैटरली ऐसे ऐसे करोगे तो स्पेस बन जाएगी. जो और अंडरकट आ रहे हैं उसको हटा दो एंड जस्ट प्लेस द लाइट बॉडी एंड यू कैन जस्ट मेक द इंप्रेशन. गॉट इट? गॉट इट? ठीक है.
देन देर इज अ, यू कैन सी देर अ ट्रिपल ट्रेस, ठीक है। जस्ट आई एम टेलिंग बेटा, कोई आपसे पूछ ले ट्रिपल ट्रेस क्या होती है, ट्रिपल ट्रेस एडवांटेज की होती है कि अगर आपको ऊपर मान लो एक एक प्रिपरेशन ऊपर करनी है सिंगल, एक दो, और एक आध नीचे कर रखी है, तो ट्रिपल ट्रे क्या करती है, इट गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ मेकिंग द इंप्रेशन एज वेल एज रिकॉर्डिंग द बाइट। तो आपको अलग से बाइट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट प्रिपेयर, प्रोवाइड इनफ स्पेस, है ना, ऊपर भी मटेरियल डाला, नीचे भी मटेरियल डाला, इंजेक्ट किया, डालेंगे और पेशेंट को बोलेंगे से बाइट कर लो, ठीक। तो यू कैन सी दैट, इफ यू सी दैट देर इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द इंप्रेशन, ऊपर और नीचे बाइट देने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यू कैन रिकॉर्ड बोथ दी आर्चेस। अगर मान लो एक अपर सिक्स ऊपर है, एक लोअर सिक्स नीचे है, तो आप लोग क्या ऊपर का इंप्रेशन लोगे, नीचे का अलग इंप्रेशन लोगे, उसका बाइट लोगे, तो डुअल आर्च इंप्रेशन ट्रेस, इसको हम ट्रिपल ट्रे भी बोलते हैं। वी कैन यूज दो ट्रेस जिसमें हमारा ऊपर नीचे का इंप्रेशन भी एक साथ आ सकता है एंड बाइट भी एक साथ आ सकती है, राइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दी फ्लॉज रिकॉर्डेड, व्हाट आर दी इन दी इंप्रेशन। हम फ्लॉज कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, देखो या तो वो तो आपने देखना है कि आपकी मार्जिन ठीक से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, बबल तो नहीं आया। देन देर आर वेरियस थिंग्स, दैट इज समथिंग देर इज नोन एज के, यू नो देर आर, इफ यू, एक सेकेंड, इफ इट इज देयर इन दिस, देन देर इज समथिंग नोन एज, आपने अगर देखा होगा, just write it down, right, if you must have seen this, there is something known as pulls and drags, pulls and drags, because you are using a viscous material। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये दांत है और आप जब उसे, या तो आपने क्या कर, आप देखो हम क्या करते हैं एज ए डेंटिस्ट, वेन एवर वी आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेकिंग द इम्प्रेशन, तो हमारी ये आदत होती है कि जब तक वो सेट नहीं हो रहा हम उसे और प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसे ट्रे को हिला रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इनिशियली वेन एवर यू आर मेकिंग द इम्प्रेशन इट्स अ विस्कस मटेरियल, तो वो क्या करेगा, वहाँ से पुल हो जाएगा। तो अगर इम्प्रेशन में अगर आप देखोगे देर आर पुल्स एंड ड्रैग्स, ठीक है ना, जैसे समझना पुल्स एंड ड्रैग्स, या इसको बोलते हैं सीटिंग ट्रेल्स, सीटिंग ट्रेल्स, तो वह पुल्स और ड्रैग्स हो जाते हैं। अगर पुल्स और ड्रैग्स आपके क्रिटिकल एरिया में हैं तो यू शुड ऑलवेज रिपीट द इम्प्रेशन। तो ये एक टर्म है पुल्स एंड ड्रैग्स, नहीं होना चाहिए। या फिर आपने ठीक से जो आपने बेस कैटलिस्ट का रेशियो ठीक नहीं लिया, बहुत जल्दी पॉलीमराइज हो गया, तो ये सब चीज़ें आपने बहुत ध्यान से देखनी है। जस्ट शो यू, इफ आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ पुल्स एंड ड्रैग, जस्ट वेट अ मिनट, ऑन द गूगल इटसेल्फ आई विल शो यू, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ओके। जस्ट शो यू क्या होता है पुल्स एंड ड्रैग। देखो ये आपने, वाई आई वॉन्ट टू शो दिस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आई डोंट हैव द पिक्चर, आई जस्ट सी, just wanted to show this, yes, can you see this, ये देखो ऐसे ऐसे खिंची खिंची चीज़ें दिखती हैं आपको, ऐसे दिखती हैं, कैन यू सी, ये ऐसी चीज़ें खिंचा खिंचा सा दिखता है, लेकिन किसी ने खींच लिया हो, इफ़ यू सी दिस मटेरियल, ये पुल्स एंड ड्रैग्स होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, राइट, इट शुड नॉट बी देयर, रिमेंबर दिस। इफ इट इज़ देयर you have to repeat the impression. Most of my postgraduate don't repeat. I won't name anybody, but you should always, because the impression has to be excellent, it has to be free of any distortion, because you can see tear but you cannot see distortion। यहाँ ये दिखते हैं drags and pulls दिखते हैं, तो अगर drags and pulls हैं especially in the area of your concern, it should be repeated। तो pulls and drags you should know about it। I hope and कोशिश करो आप, you should always make impression the custom tray, ठीक है। show you if I have more pictures of pulls and drags, चल कोई नहीं,
you can see this material being pulled away. ये देख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए. Okay, I hope things are clear. I hope everything is clear. I have given you some information and good points about in gingival retraction as well as impression making. What are the various ways you can make the impression of FPD. Okay, any doubts? If there are any doubts, kindly message. I'm waiting. Still there are 5 minutes. Okay, so I think okay, so thank you so much for the session and for your patient hearing. Signing off, Dr. Chetan Pathak. We'll meet you once again. Thank you so much. Have a great dinner. Have a great night.